Assalamu alaikum first year. Yesterday we had completed the first short story Button Button. Today, first of all, I shall discuss its ending with you. Most of the students would have been thinking that Arthur died due to pushing of button by Norma. That is wrong. As we see that the box was empty. There was no transistor, tube or wire. So it did not have any connection with any office. Arthur's death was accidental. He was pushed by crowd on the platform in front of the train. It was just a coincidence that all this happened at the same time when Norma pushed the button unit. Mr. Stewart only wanted to make his insurance policy publicly successful by giving the amount to Norma at her husband's death. So, Arthur's death did not have any connection with the pushing of button. The second thing is the last sentence of the story. When Mr. Stewart said, "Do you really think you knew your husband?" The writer wants to say that living under the same roof does not mean that we know each other. Knowing each other means to have complete mutual understanding. And that mutual understanding did not exist between Arthur and Norma. Norma did not know the feelings of her husband. By opposing her husband, she pushed the button. As a result, her own husband died. The writer wants to convey, if someone digs a pit for others, he himself falls into it. Let us come towards the exercise of the story. Reading notes. Most of the synonyms are included your papers taking from the exercise. So, you must have a clear concept about them. The first is front, turi chadhana, an expression of displeasure. Gadget, small fitting in machinery, a device or tool. Curious, eager to learn, जानने का शौकीन होना, inquisitive, पुरतजस्सुस होना. Intrigue, कैरी ऑन अंडरहैंड प्लॉट. यहाँ पे इंट्रीग का मतलब जो आपकी स्टोरी में है वो है फैसिनेट और कॉज इंटरेस्ट. श्रग्ड, रेज शोल्डर्स टू एक्सप्रेस हेल्पलेसनेस. रेज एंड कॉन्ट्रैक्ट शोल्डर्स. एक्सेंट्रिक, ओड और मैड. इम्पल्सिवली, spontaneously. Spontaneously means without thinking. Swallowed means took in. It means here accepted. Scoffing, tanzia, taunting or mocking. Glared, घूरना. Appalled, terrified, dismayed. Staking, piling up in frame for drying. इकट्ठे करना, खुशक करने के लिए. फ्यूरोर, एक्साइटमेंट, फ्रेंजी, फस. एक्सरसाइज at page number 8. Choose the correct answer. Where did Norma put the lamb chops? In the oven? No. In the broiler? In the freezer?
in the basket. The correct option is in the broiler. There was a man in the porch. No. In the room. No. At the door. No. In the hallway. Yes. Where was the key to Bell Junior Doom? In the box? No. In the drawer? No. In the sealed envelope? Yes. In the pocket? No. What was the reward for pushing the button? $25,000? No. $50,000? $5,000? $2,500? No. Option B is the correct option. What was the question of Norma that made Mr. Stewart embarrassed? नॉर्मा का कौन सा सवाल ऐसा था जिसे स्टीवर्ट घबरा सा गया? ओके, ऑप्शन ए, वेयर डू यू लिव, क्या पूछा था उसने, तुम कहाँ रहते हो? नो. हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं? नो. व्हाट डू यू सेल, आप क्या बेचने आए हैं? नो. हु डू यू रिप्रेजेंट, आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं? यस. What could have happened by pushing the button? बटन दबाने से क्या हो सकता था? Somewhere in the world a bird would die. दुनिया में कहीं कोई बर्ड मर जाता? No. Someone would die in the neighborhood. हमसायगी में, नियर अबाउट में कोई मर जाता? No. Some songs would be heard. कोई गीत बजने लग जाते, गीत सुनाई देते? No. Somewhere in the world some unknown person would die. दुनिया में कहीं ना कहीं कोई अनजान शख्स मर जाता? Yes. Why didn't Arthur agree to offer of Mr. Stewart for pushing the button? आर्थर इस ऑफर को क्यों नहीं मानता था? आर्थर बटन दबाने की ऑफर को क्यों नहीं मानता था? He considered it a practical joke. वो इसको मजाक समझता था? No. He didn't rely on him. उसको स्टीवर्ट पे एतबार नहीं था? No. He considered death of some unknown person a murder. वो किसी अनजान शख्स की मौत को भी मर्डर समझता था? Yes. Why was the offer of $50,000 attractive for Norma? Norma के लिए ऑफर अट्रैक्टिव क्यों थी? She had a plan to improve her life. Yes. She felt no harm in helping someone to conduct a psychological research. उसको लगता था कि अगर नफ्सियाती तज़किये में वो किसी की मदद कर देगी तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है. No. She wanted to purchase a set of jewelry. No. She wanted to buy a new house. She wanted to buy a new house. वो एक नया घर खरीदना चाहती थी. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ, क्योंकि प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ में उसके सारे ड्रीम्स आ जाते हैं. यहाँ पे ऑप्शन डी में सिर्फ उसका एक ड्रीम आएगा. ऑप्शन ए में उसके सारे पॉसिबल जो हैं वो ड्रीम्स आ जाते हैं. हु इन नॉर्माज ओपिनियन वाज द रिसर्चर. नॉर्मा के ख्याल में रिसर्चर कौन हो सकता है? साइकेट्रिस्ट? नो. डॉक्टर? नो. An eccentric millionaire, a murderer, an eccentric millionaire. Why didn't Norma take the consent of her husband? नॉर्मा ने अपने हस्बैंड की बात क्यों नहीं मानी? कॉन्सेंट, रजामंदी हासिल करना. टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट की हदायत मानने में, मिस्टर स्टीवर्ट की बात मानने में उसने अपने हस्बैंड की रजामंदी क्यों नहीं हासिल की? द फर्स्ट, ही कुडंट अंडरस्टैंड द आइडिया, क्योंकि उसके हस्बैंड को आइडिया की समझ ही नहीं आई. नो. ही वुड शेयर द ऑफर, उसको लगता था कि मुझसे पैसे मांग लेगा, ऑफर शेयर करेगा. नो. ही कॉन्सिडर्ड इट अ मर्डर, वो उसको कत्ल समझता था. ही कॉन्सिडर्ड इट इमोरल, वो इस बात को गैर इखलाकी समझता था, बदफीली समझता था. टू किल सम अननोन पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी, किसी को पैसों की खातिर मारना, चाहे वो शख्स अनजान ही क्यों ना हो. The next is mark the statements true or false. Norma found the cartoon in front of her door as she arrived home. Yes. Norma believed that Mr. Stewart was a guest. No. Mr. Stewart took out a key and opened the box for Arthur. No doubt. Mr. Stewart took out a key. No doubt. But he didn't open the box for Arthur. So the statement is
Wrong here. Arthur and Norma have the same reaction to the Mr. Stewart's proposition? No. They have different reactions. Norma could not resist calling Mr. Stewart back. Yes. Norma Mr. Stewart को कॉल बैक करने से अपने आप को रोक ना सकी. Yes. Norma did not agree with Mrs. Stewart to have the button unit brought back. Norma ने Mr. Stewart की बात ना मानी कि वो बटन यूनिट वापस दे जाए. Yes. Arthur said he believed that Mr. Stewart's offer was a genuine one. No, he did not believe about that. Norma wants Arthur to understand that she is interested in the proposition because the money would help the two of them. Yes, Norma चाहती थी आर्थर को ये समझाना कि वो इस ऑफर में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि पैसे से उन दोनों की हेल्प होगी. Yes. आर्थर कुड एक्सेप्ट पार्टिसिपेटिंग अलॉन्ग विद नॉर्मा. आर्थर हो सकता है कि नॉर्मा के साथ शामिल हो जाता इफ़ दे आर पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट. अगर वो ये किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा होता. नो, आर्थर वुडंट एग्री इवन डैट. नॉर्मा कॉल्ड मिस्टर स्टीवर्ट आफ्टर शी लर्नड ऑफ आर्थर्स डेथ. नो, नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर्ट को कॉल की आर्थर की डेथ के बाद. नो, इट वॉज मिस्टर स्टीवर्ट हु कॉल्ड नॉर्मा आफ्टर द डेथ ऑफ Arthur. So the statement is wrong here. The next is answer the following questions. Why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? Norma को Mr. Stewart का रवैया जो है वो कदरे नाराज़गी वाला क्यों लगा? अब क्यों लगा था? जब वो मिलने आया था वो इन्फॉर्म करके आया था. एंड नॉर्मा पोज्ड हरसेल्फ टू बी वेरी बिजी. और नॉर्मा शो कर रही थी कि जी मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए उसको लगा कि जैसे स्टीवर्ट इस बात को माइंड कर गया. वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? आर्थर अपनी बीवी के साथ इत्तेफाक क्यों नहीं करता था, उसकी बात क्यों नहीं मानता था? आर्थर डिड नॉट अग्री विद हिज वाइफ बिकॉज ही कंसिडर्ड इट इमोरल to kill some unknown person for the sake of money. Why did Norma try to persuade her husband to agree with her? Norma क्यों कोशिश कर रही थी कि उस अपने हस्बैंड को कायल करने की कि वो उसकी बात मान ले? Because she wanted to fulfill her dreams. I am just giving you the hints of answers. What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? Norma ने अपने हस्बैंड के सामने कौन कौन सी रीजंस पेश की कि वो इस ऑफ़र को मान ले? अब कौन कौन सी रीजंस पेश की थी? उसने कहा था कि इट मे बी सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. सम एक्सेंट्रिक मिलेनियर माइट हैव बीन डूइंग दिस इन ऑर्डर टू नो द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक. वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कॉन्टिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा? मिस्टर स्टीवर्ट जो था वो बार बार नॉर्मा को ही कायल करने की कोशिश क्यों कर रहा था? द टू रीजन्स. फर्स्टली ही वॉज एन एजेंट फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी. ही वॉन्टेड टू टेक हिज शेयर फ्रॉम द कंपनी. सेकेंडली he had already observed the interest of Norma in the offer when he went to see her. What was the message Norma received on pushing the button? बटन दबाने पे उसको क्या मैसेज मिला था? She received the message of her own husband's death. What is the significance of Arthur's life insurance policy? The significance of Arthur's life insurance policy was that it would be doubled in case of Arthur's accidental death. Did Norma remain normal on hearing the news of the accident of her husband? क्या नॉर्मा अपने हस्बैंड के हादसे की खबर सुनने के बाद नॉर्मल रही या नहीं रही? नो, शी वॉज नम्ब. ओके, दिस क्वेश्चन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू. The next is connect the sentence of column 1 with the relevant sentence in column 2. She sat down to open the package. She saw a folded piece of paper, scotch taped to the bottom of the box.
Arthur came out of the living room. It won't take long to explain. Where is to explain? The offer is completely genuine. The organization is of international scope. Where is international scope? Yes, this is. Aren't you sure you wouldn't care to think about it for a day or so? He placed it on the table by the door. He looked at her reflection in bathroom mirror. This is in the bathroom mirror. She took the card halves from her purse. Use the correct form of verbs given in the brackets. The whole of the story is written in past indefinite tense except the direct speeches. Norma unlocked the door and went into apartment. She turned the unit over. She reread. It would remain the same. She reread the typed note smilingly. He removed his hat as Norma opened the door. Mr. Stewart looked surprised. The image which you are watching at your screen is data of the additional questions besides the exercise questions which you will have to prepare for your exams purpose. The first is what was lying by the front door. The second is what was inside the package. Third is why did Norma telephone Mr. Stewart? What were the feelings of Norma after she had pushed the button? Who told Norma about Arthur's death? Who was Mr. Stewart? What sort of person is Norma? The next image that you are watching at your screen is that of the synonyms of important words. The first is package. Package means parcel, bun dibba. Apartment, flat. Fastened, जुड़ा हुआ होना, attached. Dome, मेहराबी, round roof. Call on, pay a short visit, थोड़ी देर मुलाकात के लिए जाना. Living room, room for sitting together. Repressed means suppressed. Restrained, रोकना. Sales pitch, business deal, कोई कारोबारी लेन देन. Monetarily, माली लिहाज से, financially. Challenged, demanded confirmation, तस्दीक मांगना. Nodded, approved, हाँ में सर हिलाना. Frowned, scowled, त्यूरी चढ़ाना. Offensive, नाराज़गी, displeasing. Gadget, device, tool, mechanism. Hesitated, lingered, relucted.
stared, घूरना, gazed, genuine, real, embarrassed, confused, scope, value, thrust, pushed with force, tossed, threw, curious, मुतजस्सिस होना, eager, interested, inquisitive, desirous, intrigue, fascinate, interest, बायस दिलचस्पी होना, क्यूरियस होता है, मुतजस्सिस होना, इंट्रीग होता है, बायस दिलचस्पी होना, एक्सेंट्रिक, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, इमोरल, अनएथिकल, गैर अखलाकी, shrugged, raised shoulder and contracted them, impulsively, carelessly, quickly, instinctively, without thinking, restraint, रोकना, restricted, prevented, swallowed, accepted, scoffing, mocking, sneering, nonetheless, nevertheless, proposition, proposal, plan, stiffened, became hard, करख्त हो जाना, of all the nerve, whatever risk may be there, खा इसमें कोई भी ख़तरा हो, glared, घूरना, stared, incredulous, doubtful, मशकूक, disgusted, नागवार, नाराज नज़र आना, displeased, repelled, astounded, हक्का बक्का रह जाना, stunned, startled, now this image is better than those, countered, मुखालफत करना, जवाबी कार्रवाई करना, ब्रोक इन, मुदाखलत करना, इंटरफियर्ड, शडर्ड, कांप जाना, ट्रेम्बल्ड, ऑफेंडेड, नाराज़ होना, एंग्री, जेस्चर्ड, अंदाज बनाना, सिग्नल्ड, वेगली, मुबहिम अंदाज में, ऑब्सक्योरली, अनक्लियरली, गार्डेड, मुहतात हो जाना, कॉशियस, इन्वॉल्व, एंटेंगल्ड, उलझना, डिसमे, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, ड्रॉबैक, पीछे हटना, सरेंडर, स्टेकिंग, इकट्ठे करना, फॉर ड्राइंग पर्पस, पाइलिंग, फ्यूरोर, नॉइजी डिस्टर्बेंस, फस, फ्रेंजी, शोर, हंगामा, कंटेम्पचुअस, काबिल नफ़रत, हेटफुल और स्कॉर्नफुल, सबवे, अंडरग्राउंड ट्रेन, शोविंग, पुशिंग, धक्का देने वाला, इंडेमनिटी, कंपनसेशन, नम्बली, विदाउट फिजिकल फीलिंग, abruptly, suddenly, world turned, smash, crash, pounding, smashing, split, तोड़ना, break, stumbling, staggering, लड़खड़ाना. Okay, we have done the exercise of the story, the additional questions and the important vocabulary. Now it's up to you to prepare your lesson properly. Prepare the translation of the lesson, the answers of the questions. The answers of the questions can be prepared by getting help from two books, Sunshine plus Innovative. Innovative is by Imran Hashmi and Sunshine is by Musarrat Hussain.
So you must